श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने बहते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रियं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। So last time we discussed till text number 40. So now we'll continue from text number 41. So last time we could complete till text number 40. So this is a division. So initially we discussed from text 1 to 12, freedom from bondage to karma yoga. So we elaborately discussed about karma kanda, then karma in goodness, and then karma yoga. Then we discussed that how one should not have a doorstep mentality. Why? Because we are not the only cause for the result. There are 5 causes, 5 factors affecting the result of an action. And then we discussed from text number 18 to 40, where Krishna talks about how the modes they control all the activities and all the beings. So knowledge in 3 modes, the knower in 3 modes, then determination in 3 modes. So all this we discussed from text number 18 to 40. Now today we'll discuss this particular section, which is from text 41 to 48, that is purification through prescribed duties of Varna and Ashram. So if you remember, the text 40 was where Krishna says that all the beings in the material world, from Brahma down to a small ant, all the living entities, they are under 3 modes of material nature. Now, prior to this, from text 18 to 39, Krishna established that among 3 modes, mode of goodness is very good. It is better to be in mode of goodness among all 3 modes. And then in text 40, Krishna says that every living entity is under the 3 modes of material nature. So now Krishna will describe from text number 41 to 48 that how these living entities who are situated in different modes of material nature, how they can achieve perfection by having engagement as per their mode and also having elevation in their consciousness. So this is a section which we'll discuss from today. This is text number 41 onwards. So now Krishna will say, okay, people are under 3 modes of material nature, but then still, while being under 3 modes of material nature, Krishna has made a system of Varna and Ashram, and how in whichever mode they are naturally situated, they can have engagement as per their modes, and at the same time, they can use that engagement to develop their love for the Lord. So now from text number 41.
So today we'll discuss from text number 41 to 48. Brahman Kshatriya Visham Sudranam cha Parantapa Karmani Prave Bhaktani Swabhava Pravave Gune. Yeah, somebody can read translation. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras are distinguished by the qualities of their natures in accordance with the material modes. O chastiser of the enemy. He's saying Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras are distinguished by the qualities born of their own natures in accordance with the material modes. O chastiser of the enemy. Krishna is saying that he has made the system of Brahmana, Kshatriya, and Vaishya and Sudra. So here this one word is very important, which is Prabhave. That means born of. Many times we see those who are born Brahmana, they many times criticize ISKCON that they make anyone as a Brahmana. So as such, the essential quality of a Brahmana is not by birth, but by his guna, how he is exhibiting those qualities which are mentioned to be a Brahman. But in general, those who are having these Brahmana qualities, they take birth in Brahmana families. So that's why it is mentioned as Prabhave, born of. Generally, as per our previous karma, as per our previous samskaras, we have certain attraction for certain modes, we have certain influence of certain modes, and naturally we take birth. But that is not the necessary criteria. That is not like a very rigid criteria. There can be a person who is born in another family, and then he may develop goodness and he may develop Brahminical qualities. But in general, what happens, as we saw in Devi and Asura Sampat also, Krishna is saying, Abhijatasya, because of their previous birth, in this birth, they are born with demonic or divine qualities. So we can't deny the influence of a previous life in current life. We cannot say that there is no connectivity between our previous births and current births. Surely, depending upon kind of person we were in the past, will have a lot of influence in the present life. At the same time, bhakti is very powerful. At the same time, person has a free will. If he wants, he can. But in general, it is difficult. In general, we have certain modes, and in general, by default, we function more in those modes. So Krishna is saying in general, people are of this quality of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra, and how Prabhave born of, they are born of these qualities. So Srila Baldev Vidyabhushan is very nicely elaborating on this particular verse describing Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Sudra. Three guna, four varna, perfect activity with the Lord. So as such, in all varna, the combination of three modes, it exists. But then, if a person, no matter which varna he is situated in, no matter which mode is influencing him, if he engages in the prescribed duty uh, pertaining to the particular varna and is worshipping the Supreme Lord, then while being engaged in his prescribed duties as per his varna, he can have steadiness in jnana and he can lead to liberation. So that's why Vedic culture is a culture of responsibility. That whichever situation you are in, be honest, accept the situation, accept that I am in this mode, and take responsibility of prescribed duties which are assigned to that particular varna, which are for that particular varna. And when you take responsibility in that situation, yeah, as per what is mentioned in the scriptures, then what happens is, and you are worshipping the Supreme Lord also, then you are able to develop your jnana.
and you are able to elevate your consciousness. So in order to express this idea, Lord begins a new topic, explaining it in 6 verses. So that means from text 42 to text 48. So now he is briefly explaining about Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra. So those who are Brahmana, they have predominance of Sattva, and because of their peaceful nature and because of their Brahmanical qualities. So you have to remember, Brahmana means predominance of Sattva. In case of Satriya, there is a predominance of passion assisted by Sattva. In case of Brahmana, they have predominance of only Sattva. In case of Satriya, they have predominance of passion assisted by Sattva as a secondary mode because of having their nature of controlling others. Then Vaishya, in case of Vaishya, they also have prominence of mode of passion, but now assisted by Rajoguna, assisted by Tamoguna. So in case of Kshatriya and in case of Vaishya, this is a difference. In case of Kshatriya, they have prominence of mode of passion assisted by mode of goodness. In case of Vaishya, they also have prominence of mode of passion, but assisted by mode of ignorance. And whereas Sudra, they have prominence of mode of ignorance. So Brahmanas and Sudras are very easy to understand. Brahmanas, they have prominence of mode of Sattva, and Sudras, they have prominence of mode of Tamoguna, that is ignorance. Now the between two, Kshatriya and Vaishya, they both have prominence of mode of passion. Difference is in case of Kshatriya, after the prominence of mode of passion, their secondary prominence is of Sattva. So they can rule in a dharmic way. They can control, they can inspire people. And then Vaishya, they have prominence of mode of passion, but then assisted by Tamoguna. So this is how these categories are divided. So those who are Vaishyas, they have prominence in dealing with money. Those who are Satriyas, they have prominence in controlling others. Those who are Brahmanas, they have a peaceful existence. And those who are Tamoguna, they are having a nature of foolishness. Like that. Now, we will describe about Brahmanas. Samo damanastapa socham santir arjavam evacham jnanam vijnanam astityam brahma karma swabhavajam. So actually in Kali Yuga, to have actual Brahmanas are extremely rare, very difficult, because there are no Brahmana families which are remaining, and they are not practicing also Brahminical standards. So very difficult. And anyone who has these qualities, that means he is having prominence of Sattva and he is a Brahmana. So these are the qualities which are mentioned. Sama, Dama, Tapa, Socham, Santir, Arjom, Evacha, Jnana, Vijnanam, Astiktim, Brahma, Karma, Swabhavacham. He is saying peacefulness. You can get this word to word. Samha means peacefulness, means equipoised. That is Samaha. Then Damaha. Dama means self-control. Brahmana is known for his self-control. Then Tapaha. Brahmana likes austerities. He delights in austerities. Then Socham. Socham means purity. Actually, Brahmanas in the Vedic time, they were very fanatic about cleanliness. We can't even think of what kind of cleanliness standard they would follow. So Brahmana means Socham, purity and cleanness inside also and outside also. Sante, tolerance. So there is a difference between Satriya's tolerance and a Brahmana tolerance. Satriya can tolerate physical pain. A Brahmana can tolerate mental pain. So in case of a Brahmana, you may criticize him, you may speak ill to him, he will be not much affected. But a Brahmana cannot tolerate physical pain. He will have a lot of difficulty if physically he is hurt. Whereas in case of Satriya, he can tolerate physical pain. His, the arrows are shooting into his body. He can tolerate, but he cannot tolerate mental pain. If you speak something ill to a Kshatriya, then for him insult is more worse than a death. He will react.
So that is the difference. And that's how we see that when um, Karna, he went to Pashuram for learning the military art and other knowledge. And he did not reveal his true identity to Pashuram. And Pashuram was thinking that he is a Brahmana. So once what happened, Pashuram, he was sleeping on the lap of Karna because they became very intimate guru and disciple. So that time when Scorpio came and while the Pashuram was sleeping, the scorpion came and the Scorpio started biting the leg of Karna and the blood started coming. So it was also very painful for Karna, but he thought if I become disturbed now, it will disturb the sleep of Pashuram, my spiritual master. So he tolerated that physical pain and he avoided to become disturbed. But then so much blood started coming out that the blood came and touched the body of Pashuram. The moment blood touched him, he got up and he saw what is happening. Then he saw so much blood coming out of the leg of Karna. And then he said he can't be a Brahmana because a Brahmana cannot tolerate so much physical pain. He will faint. In front of a Brahmana, if he finds somebody comes with a gun and shoots another person in front of him, he will faint. He can't tolerate. So he said, you can't be a Brahmana. You must be a Kshatriya because you are able to tolerate so much physical pain. So this Santi, the tolerance is a mental pain. At mental platform, a Brahmana has a very high capacity. No matter how much people they speak ill of him, but he can tolerate. Then Arjavam, honesty. A Brahmana is known for honesty. We hear that story that one boy he goes to a teacher, and the teacher asked him, "Who's your father?" And he goes to his mother and asks, "Mother, who is my father?" And mother says, "Oh, my dear son, because we were so poor, so I had to take to a profession of prostitute. And I don't know, I associated with so many people, I don't know who is your father." So mother also was a very honest teacher and a teacher because my mother being a prostitute, she associated with so many men. So I don't know. So teacher said you are a Brahmana because you are so honest. So honesty is a quality of a Brahmana, like that. Especially Vaishyas and Sudras, uh, uh, they can be very dishonest. Brahmana in particularly are known for their honesty, and even Satriyas can have great honesty. We see many Satriyas also being very honest. But Vaishyas, because they have to speak lie. Rupa says one of the important component to be a Vaishya, to do business, to earn money, is that you have to speak a lie. And Sudras, they are habitual to be dishonest. The realized wisdom. They are born with this nature. So we see in the previous time because people they had a very yeah, natural activities means from his previous life he's coming and he has taken birth with these previous impressions. You will find in our case also some of us we have certain inbuilt qualities. Some of us can't tolerate somebody who speaks a lie. Some of us have a great degree of integrity, great degree of honesty, and for some of us it does not matter much if some we are speaking a lie. So they are born with these activities. So that is controlling the internal sense, antahakarana, that is samaha. Srila Prabhupada translated sama as peaceful.
So when one can be peaceful, when he has controlled his internal sense, antahkarana. And dhamma means the external senses. That is dhamma, controlling the external senses. So internal sense means in one way is mind. External senses means our knowledge acquiring senses. That is antakarna is sama and then dhamma. So by controlling sama, one can be peaceful. And then external senses. Then accepting pains to the body which are prescribed by the scripture. This is, and then cleanness, socham. Srila Prabhupada translated as socham as purity, but socham can also mean internal and external cleanness, and that can also mean purity. And as I told, tolerance, santi. Then arjavam, Srila Prabhupada translated arjavam as honesty, and Srila Baldev Vidya is translating arjavam as straightforwardness in dealings, not being crooked. So Brahmana will not speak something else, think something else, and do something else. He is very straightforward. He does not have any hidden agenda. He does not have any ulterior motives. That's why actually somebody who has Brahminical nature, Brahminical quality, he can actually be a well-wisher to others. He can actually be helpful to others. Whereas other two categories, it depends. So here it is mentioned, he is straightforward. He does not have any hidden agenda. He is not crooked. And then jnana, he understands the superior and inferior categories of existence from jnana. And realizing the ultimate process defined in the scripture, that is vijnana. Astikyam, he has faith in the scriptures. What faith he has? He has this faith. So Prabhupada says actually a Brahmana means a devotee of the Lord. Somebody who is a true Brahmana, he must be a devotee of the Lord. So here it is mentioned, Astikya means he has faith that the Supreme Lord is to be understood by all the Vedas. He alone is the cause of everything. He is to be worshipped by the action prescribed by himself. He is to be satisfied by the devotion. He should be offered everything, including oneself. These are the actions of the Brahmana which arise from his nature. Even if these types of action appear occasionally in a Kshatriya or other Varna with an increase of Sattva, these actions are mentioned in relation to the Brahmana because of predominance of Sattva. So he's saying sometimes it happens, these actions occasionally may be done by Kshatriya or Vaishya, but consistently it can be done by those who have predominance of Sattva. So that's why these actions are spoken more in relation to Brahmana. And then he's quoting this verse from Vishnu Smriti. Sama satyam dama socham danam indriya samyamaha ahimsa guru shushuna tithanu saranam daya arjavam loba sunyatvam deva brahmana pujanam anbhaya sriya sattva brahma samanya uchyate. So he's saying forgiveness, truthfulness, control, cleanness, charity, restraint of the senses, non-violence, service to Guru, visiting holy places, compassion, straightforwardness, freedom from greed, worship of Devatas and the Brahmana, freedom from envy are the general quality of the Brahmana. So he is quoting this particular verse to give a reference that how other places also these qualities are mentioned. Now, Krishna will speak about Satriyas. Sauryam tejo dhire dakshim yuddhe chapi apalayanam danam ishara bhavacham satram karma sabhavanam. It is mentioned Saurya means heroism. And they have that courage. Teja means power. Dhriti means determination. Daksha means resourcefulness. Yuddhe in battle. Cha api apalayanam, they never flow, they never flee. Danam, generosity. Ishwara, leadership. Bhava, the nature. So this is the nature of Kshatriya. So Saurya means heroism. They can do great work. They like doing great work. Like for a Brahmana,
he'll be peaceful, he's satisfied. He does not want anything big to be done. But Shaurya, Kshatriyas mean they want to do something big. They have that heroism. Then Tejaha, they have that power, they have a lot of skill to do certain things. Then they are very determined also. You see people who crack UPSC, people who go into sports, people who start some big, um, some new adventure or something. So a lot of determination is required. Same with the soldiers in the army. Sometimes they have to go to places like Leh Ladakh, which is very cold. But then they have the determination to survive even in such an environment. And Daksham, resourcefulness. Satriya has this quality of being resourcefulness. And then Yuddhe, one of the prominent quality of a Satriya is Apalayanam. He will never flee from the battle. Now, Prabhupada quotes one story that there was one king in Jaipur. So he flee from the battle and he came and knocked at the door. And the queen from inside asked, "Who is on the door?" And the king told his name that मैं uh, so and so whom. So the queen told, "No, you can't be that because that person cannot flee from the battle. He's a real Kshatriya." So queen did not allow her husband to come in because she knew that he's coming fleeing from the battle. She told, "My husband cannot be like that. He's a real Kshatriya. He will die on the battle, but he'll not flee from the battle." Hearing such words from his wife, he again goes back on the battlefield. So that is one of the quality of Kshatriya. Srila Prabhupada says he'll never flee from the battle. He does not mind dying in the battle. He considers that as a glorious death. And then they are known for Danam, generosity. See, Kshatriya, they are very powerful, very strong to protect others. They Kshatriyas, because they have goodness as a secondary mode. So Kshatriya does not mean that they will exploit others. Kshatriyas does not mean they will try to show their prowess on the weaker ones. Kshatriya means they will protect the weaker ones and they have an attitude of helping others. So they will be very generous. They will give charity. They will see how the people they flourish. And Ishvara of leadership. They have a natural leadership quality. Like you'll find, some people they have leadership qualities. Like suppose 5, 6 boys are sitting and you ask them that we have to do this, how we can do. So one of them will automatically come out, sir, ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते. He is born with leadership qualities. Other four may be just looking at each other, क्या करना है, नहीं करना है. So in every class, in every section, you'll find some people they naturally come forward. They'll speak because they are born with leadership qualities. Baldev Bhushan, he says, Sauryam. So he says Sauryam means he is not afraid in battle. And Teja means he cannot be surpassed by others. Teja means he wants to be on the top. He is very powerful. And Virti means even in times of great stress, his senses do not become fatigued. He does not become tired. He is expert in accomplishing his task, that is Dakshyam. Even if his death is certain, he does not flee, turning his back to the enemy. Without restriction, he gives up his wealth, Dhanam. He shows powers of domination among those who should be controlled and transgress the law for protection of the citizen, Ishvara Bhavaha. Kshatriya cannot tolerate injustice. These are the natural qualities. So in Kaliuga to find a true Kshatriya also is very rare. Very rare to have a Kshatriya who is like this, who does not flee in the battle, who is very powerful, who can defeat others, who is wanting to protect the innocent, who can't tolerate injustice. So very difficult. But then these are qualities mentioned. So we may have mixture of everything, depending upon still in that mixture which is prominent. So as per that we can see. Then Krishna will now talk about Vaishyas.
कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म सुदर्श्यापि स्वभावजं. So Krishi, Go, Raksha. So these are actually main occupation of a Vaishya. Uh, when Krishna and Balram they enter into their Poganda age, six after Kaumara, Poganda. So that time they go to the farming fields. They start herding the calves also. So that time there is a verse which comes in Bhagavatam where Sukdev Goswami says that the topmost occupation are Krishi Go Rakshaya. These are the topmost occupation. Unfortunately, we see because of propaganda, farming is seen as a very low occupation. But as per the scriptures, Krishi and cow protection they are considered topmost occupation like that. So those who are Vaishyas, they were engaged in this way. They were very close to nature. They would protect the cows. They would till the land. Nowadays, we see so many kinds of businesses have started, so many useless things have started, and people are doing what not, and they are making life more complex. And these are natural occupations. And for Sudras, there is a labor and service to others. So Sudras, they can't think, they can't take risk. Other three classes, they can take risk. Like Brahmana, he takes a risk. How Brahmana takes a risk? Because he does not take employment under anyone. So he takes a risk of his life. He will do his yajan yajan, patan patan, yajna, and whatever comes by mercy of the Lord, he is happy. So he takes risk in that way. Same way, Satriya takes a risk of his life by going to the border and taking part in the battle. Vaishyas also take a risk of money. So Vaishya take risk of money by investing money in something. So these three they take risk. So that's why these three they can have leadership role in society. These three they don't work under anyone. Whereas those who are Sudras, they can't take risk. So they are supposed to be serving these three classes. Sudras, they keep crying, they keep lamenting, and they should never be given money. Shastra says if Sudras are given money, then they will use it for drinking, smoking, and all. So what can be given to Sudras is Sudras can be given roti, kapra, makan. Then they are very happy. Some devotee was telling me that in Bihar, what they do is before election, they distribute free liquor to many villages. And all the Sudras, they vote that particular party who distributes the liquor. So that is one disadvantage in democracy because most of the people are Sudras by nature. And then they become happy by such activities. So this is about Sudras. So here it is mentioned by Srila Bhakti Bhushan that activities of Vaishya are described. So he will till the land with a plow for producing food grains. Actually, Vaisyas are compared to the stomach. So they are supposed to take care of all the other varnas. They are the only earning member in society. Satriyas, they take tax from Vaishyas. Brahmanas, they are given donation from the Vaishyas. Shudras are given salary by the Vaishyas and roti kapda makan by the Vaishyas. Only earning member is Vaishyas. And they not only take care of other three varnas, they take care of other species also. So they are supposed to take care of cows, they are supposed to take care of bulls, they are supposed to take care of other animals. That is how the Vaishyas work. So they raise animal, they protect animal, they engage in buying and selling, and loaning money to increase wealth is also included. These are the natural activities of the Vaishyas. Then the activities of Sudra is described. The activity of Sudra is to serve the twice born, those of other three Varnas. Means they should serve Vaishya, Satriya, or Brahmana. These descriptions are representative of the activities of four Varna. Maybe they mention ashrama. So
These are the activities of four Varna. So now, after speaking this, then Krishna is saying, स्वे स्वे कर्मणि अभिरक्तं समृद्धिं लभते नरः स्वकर्मरतः सिद्धिं यथा विन्दति तस्मिन्. So he's saying very beautifully, see, whichever your by default nature is, by following the quality of work, every man can become perfect. Now, please hear from me how this can be. Krishna is saying, don't too much worry that which mode is influencing you more. I will tell you how you can perfect your life, no matter which varna you are situated in. So these activities give rise to knowledge. Engaging in activity prescribed according to one's varna and ashrama, one can have steadiness in jnana, which manifests from within the activity like a lotus flower arising from its root in the mud. But how can actions which are said to cause bondage lead to steadiness in jnana, which is the cause of liberation from bondage? So now Lord will explain this. This is text number 46. यतः प्रवर्तेर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवा. Lord is saying, by worship of the Lord, who is the source of all beings, who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. So any person, no matter which varna and ashram he is situated in, if he is honest and he accepts his varna and he accepts his ashrama, and then what he does is he accepts the prescribed duty as per his varna and ashrama, and he worships the Supreme Lord, then he can attain perfection by performing the respective prescribed duty. That is mentioned here. So Prabhupada is saying that we all are part and parcel of the Supreme Lord, and Lord is the source of everything. Janmadasya yataha. So therefore, Lord should be worshipped. And Prabhupada is saying, so Lord should be worshipped. That is one thing. Second thing is, as per our varna and as per our ashram. So we have to think that how, whichever occupation we are engaged in, so we have to think that this is a particular type of occupation by Rishikesh, the master of the senses. And by the result of this work, the Supreme Lord Krishna should be worshipped. If one thinks always in this way, in full Krishna consciousness, then by the grace of the Lord, he becomes fully aware of everything. This is the perfection of life. So one thing is we have to worship the Lord. Second thing is whatever prescribed duties we are having as per our varna and ashrama, we should see that how these prescribed duty also be given to me by the Lord. And how? Because through medium of spiritual master, we get those prescribed duties. And in that consciousness, we should execute those prescribed duties. Like somebody is a Brahmana. So he should think he is having a natural qualities of a Brahmana. So when he is doing yajan, yadan, patan, patan, that time he should think, oh, these are activities prescribed to me by my spiritual master and by Krishna. So let me do these activities to glorify the Lord, to satisfy the Lord. Same way as Satriya. Satriya prescribed duties are that he has to protect the innocent. He has to see that justice prevail. So when he finds something like this, then he should pray to the Lord that, Lord, please help me so that I can be helpful in this situation. And he should be generous. He should give charity to others. And in that way, he should lead, because leader also is important to in the society. So in that consciousness, he executes his prescribed duty. Somebody who is a Vaishya, he is doing cow protection, farming, or some other business. He should do in that consciousness that, my dear Lord, by your mercy, I am engaged in this particular occupation. So please help me so that I can use this to glorify you. I can use this to serve you. So he can make his work centered around Krishna. In that way, he can please. And same way, Sudra, he can see that how I can please the authorities who are engaged in devotional service of the Lord. And by serving them, he also makes progress. So like the Prabhupada is saying here. So Srila Baldev Bhushan, he says,
From the Lord arise Pravartihi, all the living entities. By him the whole universe is pervaded. Tatam. Worshipping that Lord, who is situated as the soul of all devas, such as Indra, by one's activities, offering the act to him, after performing them by thinking, may the Lord be satisfied with the act. Man attains steadiness in jnana. So how we achieve steadiness in jnana? By doing these activities and as an offering to the Supreme Lord. See, previously also we discussed this, that Karma Yoga means we have to do our activities as an offering to the Supreme Lord. So we should know that how these activities are coming. So we should do activities after taking blessing from spiritual authorities. And then we should do these activities as an offering to the Supreme Lord. So when we do this, then we can perfect our life. Then Krishna further is saying, Shreyan swadharmo vignu paradharmat so anustitaha swabhavantyam karma purvan apnoti pilvisham. What Krishna is saying here, it is better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept another occupation and perform it perfectly. Duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reactions. So देखिए हर किसी का एक धर्म है, तो वर्ण के अनुसार भी धर्म है, आश्रम के अनुसार भी धर्म है। तो जैसे ब्रह्मचारी जो हैं उनका धर्म है जो वो कार्य कर सकते हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है, उनके गुरुजनों ने बताया है, तो उनको वो कार्य करना चाहिए। वैसे ही वर्ण में है। अब कई बार लगता है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं ये करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा धन मिलता है, नहीं ये कार्य नहीं ये करूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा नेम फेम मिलता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। भगवान क्या बता रहे हैं, जो आपका स्वाभाविक नेचर है, जहां पर आप नेचुरली सिचुएटेड हो, उसके अनुसार आप अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी कीजिए। हो सकता है आप जो है उसमें उतना ज्यादा सफलता नहीं मिल रहा है, हो सकता है उसमें उतना ज्यादा जो है नेम फेम ग्लोरी या मनी नहीं मिल रहा है। अगर आप वो करते हैं तो ही आप पीसफुल वे में भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट, वरना वर्ण क्या है, कहते हैं चरण को बताते हैं, इंटरनली कंफर्टेबल एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट, वो आपका वर्ण है। तो जो एक्टिविटी जिसमें आप इंटरनली कंफर्टेबल हो और एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट हो, यानी कि वो आपका फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, वो आपका एरिया ऑफ वर्क है, और उसको हमें करना चाहिए। उससे क्या होगा, माइंड पीसफुल रहेगा क्योंकि आप इंटरनली कंफर्टेबल हो, और आपको ज्यादा समय खर्च नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके अंदर कॉम्पिटेंस है। अब जैसे देखेंगे जो नेचुरल बिजनेसमैन है, उसको बहुत अच्छा लगता है बिजनेस करना, मनी इन्वेस्ट करना, मनी गिनना, मनी देखना, और उसके अंदर कॉम्पिटेंस है, वो तुरंत कहीं से भी मनी बना देता है। उसको ज्यादा समय नहीं लगता है, वो दो चार फोन घुमाएगा, इधर उधर अरेंजमेंट करेगा, काम हो जाएगा। अब किसी का बिजनेस वाला नेचर नहीं है और वो चला जाए उसमें, वो उसका मन पागल हो जाएगा, हमेशा अंदर से अनकंफर्टेबल रहेगा, क्या यहाँ लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इस पर विश्वास करूं नहीं करूं, करूं करूं नहीं ना हाँ। तो ऐसे ही बेचारा हमेशा अनकंफर्टेबल रहेगा, और कॉम्पिटेंस नहीं है, गलत जगह पैसा लगा देगा, फिर पैसा डूब जाएगा, फिर बेचारा रोता रहेगा, हाय हाय कहाँ चला गया पैसा। तो क्यों, उसको कॉम्पिटेंस भी नहीं है और अंदर से कंफर्ट भी नहीं है, ऐसा है। वैसे ही क्षत्रिय का है। अब कोई क्षत्रिय का नेचर का नहीं है, लेकिन क्षत्रिय जॉब ले लिया है, अब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चालू हो गया, सरकार बोलेगी चलो बॉर्डर पे, और वो वहां से भाग जाएगा घर के लिए, फिर वो सरकार जो उसके पीछे पड़ेगी, नालायक भाग रहा है। तो वो अंदर से भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा, सामने वाले बंदूक उसके सामने रखेंगे, वो बेचारा वहीं पर उसको दिक्कत हो जाएगा, ऐसा। तो फिर जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो ये क्यों बताया गया है कि आप अपने स्वभाव के अनुसार कीजिए कार्य, उससे आप सेटल बॉडी आपका कंफर्टेबल रहेगा, और आप जो है बाकी जो बचा हुआ समय है वो भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। वरना संघर्ष करने में इतना समय चला जाता है, ऑलरेडी मटेरियल वर्ल्ड में इतना संघर्ष है, और हम अपने नेचर से विरुद्ध होकर कुछ कार्य करते हैं तो संघर्ष और बढ़ जाता है। और उस संघर्ष में क्या होता है, हमारा जो समय और एनर्जी शक्ति भगवान की भक्ति में लग सकती है वो नहीं हो पाती। तो इंटरनली कंफर्टेबल एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट, वो जो है आपका
प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, एरिया ऑफ वर्क है, जो आप स्पिरिचुअल अथॉरिटी से डिस्कस करके उसको स्वीकार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं हमको दूसरों की ड्यूटी को इमिटेट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई शूद्र है तो ऐसे नहीं कि वो ब्राह्मण के कार्य करना चाहता है। तो हर किसी को अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, और कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है अगर वो हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं। तो इसला बदले विद्याभूषण से because the duties of Kshatriya and others are composed of the lower guna, people losing taste for those duties should perform the duties of the Brahmana in Sattva guna. Undertaking one's own dharma, which may be inferior, is better than doing more perfectly another dharma which is superior or more utter. It is much preferred because it is prescribed by the scriptures. One should not think that subsisting on grains fallen in the field as a Brahmana is a superior dharma to one's own dharma as a Kshatriya, which has a violence, or as a Vaishya, which involves untruthfulness. Because the Brahmana's work lacks these faults. तो देखिए शास्त्र बहुत प्रैक्टिकल है। वो क्या बोलते हैं, जब तक आप जो है रजोगुण से सतोगुण में नहीं आए हैं, आप आर्टिफिशियली इमिटेट नहीं कर सकते हैं, और ब्राह्मणा का कार्य जो है इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो मानिए अगर आपका शुद्धिकरण हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन एक्ट लाइक अ ब्राह्मणा, यू कैन बी डिटैच्ड। बट आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ है और आप जो है वैश्या के कार्य छोड़ना चाहते हैं, अरे इसमें बहुत झंझट है, ये है वो है फलाना है, और आप जो है ब्राह्मणा की तरह दिखना चाहते हैं, लेकिन रजोगुण का प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है, तो क्या होगा, ब्राह्मण तो बन जाएंगे लेकिन प्रवृत्ति जो है वैश्या की रहेगी। आपको गाइडेंस के लिए आएगा, मन में विचार आएगा ये कितना दान देगा, जेब में कितना पैसा लेके आया है, इसको मैं कैसे गाइडेंस दूं जिससे कि ये पैसा ज्यादा निकाले, क्योंकि वैश्य प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन बाहर से वो ब्राह्मण दिखने का प्रयास कर रहे हैं। यज्ञ करने जाएगा तो पूछेगा कि मुनिवर दक्षिणा में कितना मिलेगा, 1,000 वाला यज्ञ करूं या 500 रुपये वाला यज्ञ करूं। तो वही भगवान बता रहे हैं कि आप आर्टिफिशियली नहीं बन सकते। ये सोच के अरे ब्राह्मण का काम तो बहुत आसान है, सिर्फ एक बैग रखना पड़ता है, उसमें एक छोटा सा यज्ञ का वो रखना पड़ता है, बस घूम के चलो, यज्ञ करा दो और दो चार चीजें बता दो, उसके बाद दक्षिणा लेंगे, दक्षिणा को ले लो और आराम से जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा सोच के अगर कोई कर लेता है तो फिर जो है उसको बहुत दिक्कत होगा। तो देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया है, अगर कोई अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है तो वो धार्मिक है, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करता है तो अधार्मिक बन जाता है। कैसे, जैसा मैंने आपको बताया, अभी कोई वैश्य स्वभाव का है लेकिन ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, तो क्या होगा, ब्राह्मण के कार्य करते समय उसको सेल्फलेस रहना चाहिए, किसी को गाइडेंस देते समय, यज्ञ करते समय, लेकिन वो क्या करेगा, वो उनसे पैसा लेना चाहेगा, वो उस तरीके से गाइडेंस देगा, उस तरीके से धारणा रखेगा, तो क्या हो गया, अधर्म हो गया। तो इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं, अगर आप अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी के अनुसार कर रहे हो, अब जैसे क्षत्रिय का आपने किसी ने ड्यूटी ले लिया, तो आर्मी में वैकेंसी लगी थी, ऑफिसर बनने की चाह थी, चला गया, ऑफिसर का सिलेक्शन हो गया। अब इंडिया पाकिस्तान का वॉर आया, ये भाग लिया वहां से कि प्रभु जी मेरे को टाइफाइड हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अब ये अधर्म हो गया ना, क्योंकि उसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। और असली में तो जब वॉर होती है तब क्षत्रिय का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन ये भाग लिया। अब क्योंकि ये भाग लिया तो ये अधर्म हो गया। अब क्योंकि इसने किसी और का धर्म इमिटेट किया इसलिए धर्म में फंस गया। अब ऐसे ही शूद्र है, अगर वो जो है कुछ वैश्य बनने का प्रयास करता है तो इधर उधर पैसा लगाएगा, वो इधर उधर हो जाएगा, फिर क्या करेगा, चोरी करेगा, इधर उधर से डाका मारेगा, अधर्म हो गया। तो कितना साइंटिफिक आप देखिए, एक तो है कि आप भौतिक स्तर पे सुख नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते अगर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। दूसरा है आप धार्मिक नहीं रह सकते अगर हम अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। फिर अंतिम जो श्लोक है उसमें भगवान जो है बताते हैं कि भले आप बोल सकते हैं कि लेकिन हम जो हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसमें तो बहुत कष्ट है, क्या करना चाहिए, भगवान उसको एड्रेस कर रहे हैं।
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वरारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए आप भौतिक दुनिया में हो, परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करो। आग है तो आग के साथ धुआं होगा। उसी प्रकार से चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, सबके कर्म में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो जैसे जो ब्राह्मण है वो कई बार बहुत अच्छी तरीके से सेल्फलेसली कार्य कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन लोग धोखा दे सकते हैं उसको। वो तो सेल्फलेस है, लेकिन लोग धोखा दे सकते हैं, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। क्षत्रिय है, उसमें वॉयलेंस है, उसको खून देखना पड़ता है, लड़ाई करना पड़ता है, लोगों को काटना पड़ता है, मारना पड़ता है, तो ये फॉल्ट है। वैश्य है, उसमें झूठ बोलना पड़ता है। रूपा जी लिखते हैं, अगर कोई वैश्य बोलता है कि आपसे मैं बिल्कुल भी मुनाफा नहीं कमा रहा हूं, आपके लिए बिल्कुल जिस रेट पे मैंने खरीदा है उसी रेट पे आपको मैं दे रहा हूँ, रूपा जी बोलते हैं ये उसका काम है बोलना, इसका मतलब वो जरूर प्रॉफिट मार रहा है आपसे। क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, वो कभी अच्छा बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता। जब भक्ति विनोद ठाकुर थे तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, एक शुगर की कंपनी में शुरू में जो है उन्होंने नौकरी ले लिया था। तो वहां पर क्या था, एक व्यक्ति आया, वो कुछ शुगर की बोरी चाहता था। तो उसने क्या थोड़ा सा ब्राइबरी दे दिया जो वहां का मैनेजर था कि 2-4 बोरी मेरे को अलग से दे दो। मैनेजर ने दे दी, भक्ति विनोद ठाकुर ने देख लिया, तो उन्होंने बोला अरे क्या कर रहे हो, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जो मैनेजर ने देखा, तो मैनेजर भक्ति विनोद ठाकुर को बोलते हैं कि भाई ठाकुर साहब, आप टीचिंग कीजिए, आपको टीचिंग को छोड़ के और कोई जॉब आप नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने देखा ये इतना ऑनेस्ट है। रशिया में तो थोड़ा चलता है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर जी को बोला आप टीचिंग कीजिए, आप जो है वैश्या के गुण आप में नहीं है। तो हमें क्या है, दोष से कारण अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं छोड़ना चाहिए। और शूद्र है, उसमें सुनना पड़ता है, लेकिन अगर हमारा वो स्वभाव है तो वो करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कोई भी आप कार्य कीजिए, अगर आप उसको भगवान के लिए करते हैं तो वो एक्चुअली में असली में तो ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। ठीक है, अभी हमारा स्वभाव है, लेकिन जितना हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, धीरे धीरे करके क्या होगा, वो शुद्ध सत्व हो जाएगा। तो हमें उसमें चिंता नहीं करना है कि छोटा कार्य है बड़ा कार्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने स्वभाव के अनुसार करें, और धीरे धीरे करके हम जो है परफेक्ट हो जाएंगे और 3 गुणों के परे हो जाएंगे। तो ये आज का सेक्शन था, टेक्स्ट नंबर 41 to 48, हाउ वी कैन वर्शिप कृष्णा एज पर अवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, एज पर अवर वर्ना एंड आश्रम। हरे कृष्ण। If somebody has some question to ask, they can ask them. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, नमस्कार। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि जो वर्ण है चार और जो चार आश्रम है अपने ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास, इन वर्ण और आश्रम में भी आपस में कुछ रिलेशन है प्रभु जी? हाँ, इसमें भी देखिए ऐसा रहता है कि जनरली जो ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्थ एंड संन्यास, तो इसमें जैसे कि जो ब्रह्मचारी है तो उसमें जितना सतोगुण की प्रधानता रहेगा उतना ब्रह्मचारी जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके कार्य भी उसी प्रकार से होते हैं। और जो गृहस्थ है उसमें थोड़ा रजोगुण की जरूरत है, तभी वो गृहस्थ जीवन जो है जीवन जो है आगे बढ़ा सकता है। फिर वानप्रस्थ है, वापस फिर सतोगुण की प्रधानता चाहिए। और फिर सन्यासी है, वापस उसमें सतोगुण की प्रधानता चाहिए। तो आश्रम जो है वो क्या करता है, हमारे स्पिरिचुअल एलिवेशन में हेल्प करता है। तो किसी का कोई भी वर्ण है, किसी का कोई प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, उसमें अगर वो भगवान की भक्ति करता है और उसमें वो धीरे धीरे करके अपना सत्वगुण का विकास करता है, तो क्योंकि जब वो भगवान की भक्ति कर रहा है और शास्त्रों के अनुसार अपना कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो उसमें स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो तभी तो भले कोई भी वर्ण का हो, आप देखेंगे जो हमारी वैदिक प्रणाली है उसमें शूद्रों को छोड़ के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वानप्रस्थ ले लेते थे गृहस्थ आश्रम के बारे में। तो वानप्रस्थ क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि इनका रजोगुण उतना शुद्ध हो चुका है। और फिर वानप्रस्थ में वो तपस्या करते थे,
और फिर संन्यास भी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन शूद्रों के लिए मना किया है, क्योंकि शूद्र जो है उनको बहुत समय लगता है आगे बढ़ने के लिए और अपने मोक्ष जो है उनको शुद्ध करने के लिए। वो वानप्रस्थ में भी जाएगा, फिर वहां रोने लगेगा, मैं वानप्रस्थ क्यों ले लिया, भगवान तो सेब भेज नहीं रहे हैं, फ्रूट भेज नहीं रहे हैं, खाने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसा है। ठीक है। यस प्रभु जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस आकाश तू। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये था कि प्रभु जी, जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र डिसाइड हो रहा है, ये जो भगवान बोलते हैं गुण कर्म विभाग से, उसके बाद का स्टेज है ना? हाँ या राइट। प्रभु जी इसमें क्या तो है, जन्म से भी मीन्स टू ग्रेट एक्सटेंट हमारा प्रीवियस लाइफ और जिस तरीके से हमारा जन्म हुआ है, तो टू ग्रेट एक्सटेंट हमारा गुण उस प्रकार का होता है। लेकिन इसका जो मापदंड है वो गुण कर्म विभाग से ही देखना चाहिए, ओनली बर्थ से नहीं देखना चाहिए। यस। प्रभु जी, मतलब एक आपने ये तो थोड़ा क्लियर हो गया कि ग्रेट एक्सटेंट तक जन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी को समझाना हो, जैसे आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने वैदिक संस्कृति में सबको स्लेव बना के रखा था, ब्राह्मण ही प्रोमिनेंट थे, उन लोगों ने अपना एक प्रोपेगेंडा फैला के रखा था, तो उनको कैसे समझाएंगे ये चीज कि ये बाई बर्थ नहीं था, गुण कर्म से था? या मतलब उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कैसे दे सकते हैं और खुद भी कैसे समझ सकते हैं? नहीं, सिंपल सा है। देखिए, उनको पहला चीज बताइए वैदिक संस्कृति का पतन क्यों हुआ। क्योंकि जितने भी वर्ण और आश्रम हैं उनका गोल जो है उससे लोग विचलित हो गए। गोल क्या है? सम सिद्धि हरितोषणम। चाहे ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, अगर ये गोल रहेगा सेंटर में तो ये पद्धति अच्छी तरीके से काम करेगा। गोल नहीं रहेगा तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यही कारण है वर्णाश्रम के फॉल डाउन का। दूसरा चीज, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो उनमें गुण होने चाहिए, सिर्फ बर्थ क्राइटेरिया नहीं। बर्थ के अनुसार ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनमें गुण हो, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, कोई डॉक्टर का बेटा है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डॉक्टर बन सकता है, बट उसको भी तो डॉक्टर बनना पड़ेगा ना। तो वैसे ही गुण कर्म विभागसा के अनुसार देखा जाता था। और ये ब्राह्मण वैसे शूद्र जो हैं, ये एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए, compete करने के लिए नहीं बने। ये एक ही शरीर के पार्ट हैं जो सहयोग करने के लिए बने। तो ये सिद्धांत भूलने के कारण जो है इस प्रकार की धारणा है, या कास्ट सिस्टम को लेके इस प्रकार का नेगेटिव वो है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक समसिद्धि हरितोषणम स्टेब्लिश नहीं होगा कि गोल इज टू प्लीज कृष्णा, तब तक वर्णाश्रम स्टेब्लिश नहीं हो सकता है। ठीक है। प्रभु जी, एक और छोटा सा था कि तो प्रभु जी, ये कंटेमिनेशन कहाँ से आ गया था? जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि शूद्रज आर मीन टू सर्व ऑल थ्री क्लासेस, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य, तो ये कंटेमिनेशन आ गया था, अनटचेबिलिटी और ये सब, तो ये कहाँ से आ गया? ये कलयुग का प्रभाव है। अभी हम लोग कलयुग में हैं तो कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में ये सब रहेगा। अगर आप द्वापर युग में होते, त्रेता युग में होते, सतयुग में होते तो प्रॉपर आपको वर्णाश्रम में दिखाई देता। तो कलयुग में ये प्रभाव है। जितना प्रचार होगा, जितना लोग भक्ति जीवन को अपनाएंगे, उतना शुद्धता रहेगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू। यस पवन को। Hare Krishna Puri, you were mentioning that we should try to do the works uh, in which we are internally comfortable and externally competent. But it seems that it's only theoretical, because if some person is there who is not having the mother and not having father as well, he has to earn his livelihood, maintain his brother, then he has to pick up the job, whichever can give the money. Similarly, in the case of duty also, sometimes they are in the need, they will take any type of job whether they feel comfortable or not. Similarly, one can be put in the situation when they have to serve. It does not matter they are comfortable or not, but that is the need of the hour. So how we can see this? नहीं, तो शास्त्र बोलता है अपात धर्म के बारे में। लेकिन अपात धर्म जो है वो कुछ समय के लिए हो सकता है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए ही अपात धर्म करता है तो उसके लिए अच्छा नहीं है, फिर वो भक्ति नहीं कर पाएंगे उतना अच्छा। जहाँ तक भक्तों की बात है, जैसे कि आश्रम में जो भक्त लोग रहते हैं, तो आप देखना वो बाय डिफॉल्ट कुछ सालों के बाद में उनके स्वभाव के अनुसार ही सेवा ले लेते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है। भक्ति पद महाराज बोलते हैं, उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा था टेम्पल कमांड ने, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूट करके आओ।
तो वो 4 भक्तों को लेके गए, 3 घंटा बुक वितरण किया, 300-400 रुपए का पेट्रोल जो है जलाया, गाड़ी से गए थे, और 3 किताब डिस्ट्रीब्यूट की। तो टेम्पल कमांड ने बोला तुम बुक डिस्ट्रीब्यूट मत करो, तुम यहीं बैठो। तो उनका क्या शुरू से ही नेचर था, पढ़ने का पढ़ाने का, पढ़ने का पढ़ाने का। अब आप देखो क्या करते हैं भक्ति पद महाराज, वही करते हैं। हर किसी का ऐसा है, जैसे मेरे केस में मेरा शुरू से ये था कि मुझे प्रीचिंग करना है, और कितना प्रयास किया देवकी पुणे की इसको टेम्पल में ही जो है इंगेज करना है। मेरे को मेंटेनेंस दिया, गार्डन दिया, क्लीननेस दिया, सिक्योरिटी दिया, पार्किंग दिया, किचन दिया, सारे डिपार्टमेंट। सब डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी मेरा सबसे ज्यादा समय प्रीचिंग में ही जाता है, क्योंकि जहाँ आपका नेचर है ना, वहीं आप पीछे चले जाते हो। लेकिन हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करना है। जितना वो करेंगे अपने स्वभाव से, उतना स्वभाव शुद्ध हो जाता है, फिर शुद्ध अवस्था में आप कुछ भी कर सकते हाँ, तो ये तो हो। तो आप एकदम आपात धर्मा कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो सही नहीं है, आप भक्ति नहीं कर पाएंगे ऐसा। the examples you mentioned, I could not understand properly because that's the problem. Just like you mentioned that Devkin and Puji gave you some services, but यस, you are more inclined to getting services. So does this यस। not become an non-being accountable or being undutiful because we नहीं, are not? नहीं, बिकॉज ही इज वेरी हैप्पी विद अदर सर्विसेज ऑल्सो। देखिए क्या होता है, कुछ चीजें जो आप करना चाहते हो ना, वो कोई नहीं भी बोलेगा तब भी आप करो। जैसे कुछ भक्तों को भागवतम अच्छा लगता है, वो कहीं भी समय निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनको बोला गया है उसके प्रति वो इरिस्पॉन्सिबल। फिर क्या, लॉर्ड भी वैसा सिचुएशन अरेंज कर देते हैं, आपको वैसे रिसोर्स मिल जाते हैं, वैसे डिवोटीज मिल जाते हैं जो बाकी सेवा अच्छी तरीके से कर पाते हैं, और आप अपने स्वभाव के अनुसार वो सेवा कर सकते हैं। किसी भी डिवोटी का आप देखना, वो धीरे धीरे करके उसके अथॉरिटीज भी उसको उसी सेवा में जो है ज्यादा इनकरेज करेंगे इवेंचुअली। Okay. क्योंकि Puji, one आपका more thing. स्वभाव वो है, तो आप उसी सेवा में ज्यादा अच्छा भी कर सकते हो ना, क्योंकि आपका कॉम्पिटेंस भी वहीं पर है। And how we can understand this? How much we should follow the path dharma for how long? नहीं, देखिए जो ब्रह्मचारी हैं उनको तो सोचना नहीं पड़ता है, दे शुड जस्ट फॉलो देयर अथॉरिटीज, और वो धीरे धीरे करके अपने आप ही, कृष्णा बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं, तो वो अपने आप ही स्टेब्लिश कर देंगे। जो गृहस्थास हैं, दे कैन थिंक दैट एज पर दिस, मेरा जो जॉब है वो ऐसा रहे जिससे कि मैं अपनी भक्ति कर सकूं। ये एक पैरामीटर को ध्यान में रख के प्लानिंग करेंगे तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा उसके अनुसार। तो जो भी आप जॉब लें वो ऐसा लें जिससे कि आप भक्ति कर सकें, सेवा कर सकें। अगर आप ऐसा जॉब ले रहे हैं जिसमें आप भक्ति के लिए समय नहीं है, सेवा के लिए समय नहीं है, तो वो जॉब हेल्दी नहीं है। करेक्ट ना? Yes, Puji, just one more thing I want to ask. So from this 18.48, you were mentioned that we should not give up the work because some difficulties are there in this. Some of the difficulties might be there, but previously only before this today's discussion, the whole some mono was that we should try to come in the mode of goodness. But if you will see from the qualities, then the prominence of goodness is there in the Brahmana. So so then why we should not try to become a Brahmana? Because previously the whole discussion was like this only, right? Try to develop the mode of नहीं, good. तो वो भगवान ने बताया इससे पहले कि सतोगुण में आना बेस्ट है, लेकिन आप एक रात में सतोगुण में तो नहीं आ सकते हो, तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो अभी के लिए आप क्या कीजिए, जो आपका स्वभाव है उसके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कार्य कीजिए, और धीरे धीरे करके जब आपका सतोगुण का विकास आ जाएगा, हो जाएगा, तो फिर आगे बढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Thank you, Puji. हरे कृष्ण। यस, कमल ब्रो। तो जी ये थोड़ा ऐसे सिमिलर डाउट था इसमें, जैसे 47 में लिखा है कि जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, ऑक्यूपेशन है, उसको वो करना चाहिए भले इम्परफेक्टली, ऐसे ट्रांसलेशन में टोपा जी लिखे हैं। और उसमें जैसे वर्णा में एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट एंड इंटरनली कंफर्टेबल, तो ये दोनों चीज थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट लग रही थी कि क्या मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है इसमें? जैसे कोई अगर क्षत्रिय है तो ऑल्दो क्षत्रिय का वो परफेक्टली नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसको ऐसे ही बिजनेस करना है। और इसमें जैसे वर्णा में बताते हैं कि एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट होना चाहिए और एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट और इंटरनली कंफर्टेबल। नहीं, देखिए इसमें क्या है, भगवान जो है ये पॉइंट स्टेब्लिश कर रहे हैं कि आप जो है अपने स्वभाव या वर्ण के अनुसार जो है ऑक्युपेशन को कीजिए। तो अब किस कारण से कोई अपने स्वभाव के ऑक्युपेशन को नहीं करेगा? दो कारण हैं। एक तो है उसको लगता है कि नहीं नहीं, मैं जो है ये वाला चीज जो है ये अच्छा लगता है, ये मैं कर सकता हूँ।
दूसरा, उसको लग सकता है कि अरे मेरे वाला वर्ण के कार्य में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत कठिनाई हो रही है। तो भगवान पहले वाले को एड्रेस करते हैं कि अरे आपको वो बाहरी रूप से दिख रहा है कि अच्छा है, जैसे कि अर्जुन को लग रहा है कि अरे युद्ध क्यों करना है, मैं तो जंगल में जाके ब्राह्मण बन जाऊंगा, बहुत आसान है, कर लूंगा, अच्छी तरीके से कर लूंगा। लेकिन क्या है, उसके लिए जो इंटरनल एटीट्यूड चाहिए वो है नहीं आपके पास में, तो अधर्म हो जाएगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, आप बाहर से तो कर लोगे, फिर जंगल में जाओगे, भिक्षा मांगोगे, और कोई बोलेगा भाग यहाँ से, आया भिक्षा मांगने के लिए, तुरंत तलवार मार के उसको काट दोगे, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है अंदर से। तो आया समझना कमल को? यस प्रभु। हाँ, तो टोटलिटी में आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। कई बार बाहरी रूप से लगता है, अरे कई बार होता है ना, कोई ग्रस्त है, उसको एकदम आता है, अरे बहुत हो गया प्रभु जी, सब छोड़ के जाना चाहता हूँ, वृंदावन भक्ति करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कष्ट से भागना चाहता है। जब वृंदावन में जाएगा फिर बीवी को फोन करेगा, हेलो कैसी हो, क्या है। करेक्ट ना? तो वृंदावन जाने के लिए डिटैचमेंट चाहिए ना। आया समझना? हाँ यस प्रभु जी, थैंक यू। ठीक, हरे कृष्ण। Thank you very much. So we'll continue from text number 49 tomorrow. Right. So, Prabhupada, please.